Pradeep, Yes, sir. Good morning. you did not give the mock interview. Yes, sir. Right. Don't you want? I wanted to do the interview. Yes or no? Yes, sir. So let's start your mock interview first, then we'll go for session. So why didn't you join yesterday? As I already informed, it was pre-planned, informed, no Yes, sir. runtime. Let's check. Let's have a mock interview. Yes. Okay. I'll share a separate link with you on your G chat. Okay. 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 REST basically stands for representational state transfer. Okay. This is a full form of REST, representational state transfer. So it is not a protocol, it is an architectural style. Okay, which works based on actually the web. So over the web internet, you can access RESTful web service, REST API. And therefore today it is very, very popular. So means if there is any resource, okay, that resource state is transferred from one form to another form. So that is represented in RESTful web service. So it is therefore useful to develop lightweight, maintainable, scalable web service. And again, same like SOAP web service, it is platform and language independent, and it still can make use of. So the main advantage of using RESTful web service is what? It supports different data format. Means the result of the RESTful web service, the output of the RESTful web service can be sent, okay, in the form of text, plain text, or HTML, or XML, or even JSON. Okay, so this is the flexibility. Now let's understand resource-oriented architecture, which contains resource, URI, and resource representation. So let's understand these three terminologies. What is by resource? Resource means what? Anything in the world which is useful to you. Anything, absolutely anything. This, for example, if you talk about mobile, okay, if you talk about water bottle, if you talk about fan, okay, even computer, even in the computer, we can say the uh, bytes data, okay. So that is nothing but the resource. Okay, means everything in the world which is useful, which you feel that it is useful, that is called resource. Just a minute, ये क्या गड़बड़ कर रहा है? हाँ प्रदीप, now are you okay? Yes, sir. Have you settled? No, no. I am outside right now. हाँ. But we will take interview on Monday. Is it okay? When? At your time, please give me. I will. Okay, so the Monday then in the morning we will take your mock interview. Yes, sir. Yes. Okay, but please यानी कि वो क्या बोलते हैं ना हिंदी में, चुना मत लगाओ. Okay. Yes, sir. हाँ, ऐसा मत करो यार. We are professional. You are also professional. I am also professional. Okay. Yes. So ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस के थ्रू जाने चाहिए. बाकी के लोगों ने मॉक इंटरव्यू कल क्यों नहीं आया? What is the problem? कल सर भाई का एक रूटीन चेकअप था, तो लेके जाना पड़ता है. तो आपको मॉक इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है? पहले वो बोल दो मुझे. यस सर, देना है मुझे. ठीक है, तो मंडे देन फिक्स. ओके. यस सर. Okay, fine. So whenever you start the session, I will take your mock interview first. Yes, sir. Yes. Okay, so now resource
is anything which is important enough, okay, which is reference as a thing in itself. Means anything which is useful can be called as a resource. Means right from small pen or even small needle, okay, and anything. Means even you can say, okay, you feel river, you feel water, everything is a resource. So that is what explain here. Resource may be a physical object like apple, even account, bank account is a resource, even abstract concept like courage, that is also resource. Means, for example, to do something, okay, which is challenging, you require courage. Courage is a resource. If person does not have courage, person cannot do anything in his or her life. So courage is required to do, means to step out of comfort zone. Okay, you require courage, right? Means person requires courage. So courage is a resource. If the person does not have courage, then person cannot see the world, cannot do the things out of the comfort zone. So even resource can be stored on a computer as a stream of bytes or bits, such as documents, or even resource can be a small row in a database, or even a document in NoSQL database. Okay, even resource can be some result of running algorithm. Everything, okay, which is useful can be considered as a resource. So every resource is unique. This is very important point. Every resource is a unique. Okay, means no two resources can be same. Every resource is unique. Means we cannot say that ye do same ही. If they were same, then actually you deal with single resource. मीन्स आपको अगर लगता है कि अरे दोनों सेम ही है, तो मीन्स एक्चुअली यू डील विद single resource. So we are not talking about duplicate or clone. Okay, we are not talking about that. Even clone is a separate thing. क्लोन है किसी का, कॉपी भी है, लेकिन वो सेपरेट है ना, सेपरेट एग्जिस्ट करता है. देयर इज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस. तो एंड उसको हम क्लोन कॉपी बोलते हैं, उसको ओरिजिनल बोलते नहीं. तो ओरिजिनल एक रिसोर्स है, कॉपी एक रिसोर्स है, दो अलग अलग रिसोर्सेस. सो नो टू रिसोर्सेस कैन बी सेम. यानी कि हम कॉपी को कॉपी ही बोलते हैं, ओरिजिनल को ओरिजिनल ही बोलते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay, so resource can be anything. If a user of resource might want to create a hyperlink to it, or if the user of resource might make some assertions about it, or user of resource might, okay, refute assertions about it. यानी कि आप किसी चीज के बारे में आपको assertions बताना है, okay, यानी कि टेस्टिंग करना है, तो you want to, okay, retrieve the representation of that resource, or you want to store, cache करना यानी कि store करना, representation of that resource. यानी कि कोई सॉन्ग है, ओके, तो आपको वो सॉन्ग अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो, वो सॉन्ग, ओके, स्टोर कर सकते हो, तो इन द फॉर्म ऑफ फाइल विच इज mp3 फाइल. तो mp3 फाइल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉन्ग. ओके, mp3 फाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉन्ग. और किसी को वीडियो सॉन्ग अच्छा लगता है, तो mp4 फाइल. So that file is a representation of that song. The song is a resource. Okay, include all or part of that resource by reference into another representation. Okay, और you want to annotate the resource. Annotate यानी कि उसके बारे में कुछ extra information देना है. Annotate देना है यानी कि meta information. You want to give the extra information about the resource. Or a user of resource might perform other operations on it. यानी कि user जो है किसी भी resource का, उसको कुछ बाकी के operation करने, then you should make that thing as a resource. यानी कि in the world, whatever you feel that important in your life, from smallest thing to the biggest thing, is considered as a resource. Whether it can be the abstract concept, okay, or it can be physical thing, even that is considered as a resource. This, for example, account, certificate, education, okay, everything can be resource. Courage, fear, okay, so cleverness, okay, intelligence, these are all resources. Resource examples. For example, as far as our technical world is concerned, suppose we want some software release, okay, of version 1.0.3. So this is a resource. Or maybe you require latest version of that software release. Or you may be interested in getting the first weblog entry for October 24, 2006. Or it may be roadmap of Pune city in Maharashtra, India. Or some information about jellyfish. Or even a directory of resources pertaining to jellyfish. Even next prime number after 1024. Even next 5 prime numbers after 1024. So these are all resources. And these are just to give you an idea.
Yes, this can be the resources. Sales number of quarter 4, 2004. So now these are resources. Now you can access any resource by giving the name and address. For example, if something is a resource, तो उसको आप किसी name से पुकारते हो. Okay, means for example, if any person, okay, rather than person, I will say, okay, any baby comes in the world, okay, then to that body, some name is given by the parents. So then, okay, that name and address is a reason is that baby will, okay, be fulfilled, will be nourished, okay, will become, okay, great person, and will also serve the family, his or her family, or maybe, okay, country, and even entire world. So that is what, okay, that person works like a resource. But to that person, some name should be given. That person should have address. So therefore, everything, if you feel that, is a resource. जैसे कि आपके लिए अभी ट्रेनर रिसोर्स है, ओके, लाइक दिस. तो ट्रेनर से आपको ये चीजें मिलती है, तो ट्रेनर इज योर रिसोर्स, ओके. But then every resource should be addressed. Every resource should have, okay, some name. So that is nothing but called URI. So URI stands for Uniform Resource Identifier. Okay. And it is nothing but the name and address of resource. Okay. A resource may have one or many URI, but no two resources can have same URI. यानी कि एक resource, एक जो resource है, उसके multiple name and addresses हो सकते हैं. But those resources cannot have same URI. Means अगर आपको लगता है same है तो कोई तो distinguishing factor चाहिए. No two resources can have same URI. Okay, a resource may have one or many URI. For example, if there is a small kid, उसको, okay, स्कूल में, okay, कुछ रमेश नाम है, okay, उसके जो फ्रेंड्स है उसको कुछ दूसरे नाम से पुकारते हैं, यानी कि वो दूसरा नेम. ओके, फैमिली में उसको चिंटू करके पुकारते हैं, तीसरा नेम. ओके, सोसाइटी में उसको पिंटा करके पुकारते हैं, चौथा नेम. सो दिस इज हाउ वन पर्टिकुलर रिसोर्स कैन हैव मल्टीपल यूआरआई. जैसे कि एक पर्सन के बहुत सारे नेम हो सकते हैं, पेट नेम और व्हाटएवर. सेम थिंग हियर, अ रिसोर्स कैन हैव वन और मेनी यूआरआई. बट दो रिसोर्सेस के सेम यूआरआई नहीं हो सकते. अगर वो हमें लगता है कि है तो वो एक ही रिसोर्स. ओके, यानी कि आप बोलेंगे हाँ इसका भी नाम रमेश है, उसका भी नाम रमेश, लेकिन माय फ्रेंड उसके सरनेम अलग होगा. ओके, अगर सरनेम भी सेम है तो ऑब्वियसली मदर का नेम तो अलग ही होगा ना. गेटिंग माय पॉइंट. ओके, सो यानी कि एक ही घर में अगर दो ट्विंस भी जन्म लेते तो उनके नेम अलग ही रखते. ट्विंस है लेकिन नेम अलग है. ओके, ऐसा कभी देखा नहीं कि दो ट्विंस है और उनके नेम एग्जैक्टली सेम, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा ना. सो देयरफॉर नो टू रिसोर्सेज कैन हैव सेम यूआरआई. एंड इफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव यूआरआई, देन माय फ्रेंड उसको हम रिसोर्स नहीं बोलते. यानी कि किसी, ओके, चीज को अगर आप नेम देते नहीं, एड्रेस देते नहीं, तो उसको हम यूआरआई, सॉरी, उसको रिसोर्स नहीं. ना हाउ टू असाइन द यूआरआई. तो कोई भी रिसोर्स, यानी कि आप भी अगर अभी टेक्नोलॉजी में आपके रिसोर्स बनाएंगे, ओके, तो देन इन दैट केस यू शुड, ओके, असाइन सम URI. So how URI should be assigned? So URI should be descriptive. URI should have structure, proper structure, and URI should vary in predictable. जैसे कि देखो, किसी पर्सन का अगर हम नेम लेते हैं इंडिया में, ओके, तो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग, ओके, तरीका है नेम देने का. यानी कि अगर, ओके, रमेश, प्रकाश, ओके, पवार अगर हम बोलते हैं, तो इसमें कोई भी अगर किसी को नाम बताएंगे तो पता चल जाएगा. रमेश है उसका खुद का नेम है, प्रकाश उसके पिताजी का नेम है, और पवार उसका सरनेम. तो ये एक प्रेडिक्टेबल डिस्क्रिप्टिव, ओके, वे. वही अदर कम्युनिटीज में अलग तरीका होता है नेम देने का, लेकिन वहां भी वो प्रेडिक्टेबल है, डिस्क्रिप्टिव है. ओके, एंड कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यानी कि पहले इनिशियल नेम, देन मिडल नेम और फादर नेम, एंड देन सरनेम. दैट इज स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्टिव. So this is very, very important. So every resource, whenever you create, it should have URI which is descriptive. It should have proper structure and predictable. जैसे कि अभी देखो ये जो रिसोर्सेस है, वर्जन 1.0.3 ऑफ सॉफ्टवेयर रिलीज, तो इसको URI देना है. यानी कि इसको कंसीडर ऑल दिस रिसोर्सेस आर केप्ट ऑन सम सर्वर, और फिर ये रिसोर्सेज एक्सेस करना है तो उनके URI देना. तो कंसीडर ऑल दिस रिसोर्सेज आर केप्ट ऑन दिस फिनिक्स, ओके, वेबसाइट www.phoenix.com. एंड अभी पहला जो रिसोर्स है, ओके, दैट इज नथिंग बट वर्जन
1.0.3 of the software release. The software releases 1.0.3 और ये लिनक्स वाला फाइल है tar.tree. वही अगर विंडोज वाला है तो exe होगा, ओके, और zip होगा. Then latest version of software release, ये एक रिसोर्स है, उसका URI है, software releases latest.tar.gz. The next resource, first weblog entry for October 24, 2006. तो देखो ये weblog 2006 10 October 24 date and 0 यानी कि first weblog entry. Next resource is map, road map of Pune city in Maharashtra, India. तो देखो यार, map of what roads of in map of roads in India, again in India Maharashtra and in that Pune. तो ये जब आप कोई भी रिसोर्स बनाते हैं उसको ऐसा हम URI देते हैं. So it is predictable, okay, descriptive and structure. Similarly, if you say some information about jellyfish, Wikipedia, right? Wiki/jellyfish. Now a directory means collection of resources, okay, related to jellyfish, pertaining to jellyfish. So यहाँ search jellyfish. Similarly, next prime number after 1024. So देखो next prime 1024. Next 5 prime numbers after 1024. So now you can say next 5 primes 102. Then sales number quarter for 2004. So sales 2004 quarter 4. Okay. So this is how URI. So this is how resource oriented architecture. अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ठीक है रिसोर्स है कुछ, उसका URI मिल गया, लेकिन वो रिसोर्स कैसे दिखता है, हाउ दैट रिसोर्स लुक्स लाइक, what is the representation of that resource. So in technical world, any resource can be represented in different format as far as RESTful web service is concerned. So resource can be represented in plain text format, it can be represented in HTML format, it can be represented in XML format or even JSON format, or even it can be represented in the form of graphical chart. Okay, so that is how any useful information about the state of resource is called resource representation. So this is about, my friends, resource oriented architecture. Any doubt? Any query? Should we continue? Yes, sir. Okay, fine. Uniform interface. Now in RESTful web service, you access any resource using the HTTP methods. You keep the resource over the web server, okay? I mean HTTP, okay, web server, HTTP server बोल सकते हैं, and you access those using HTTP protocol, I mean its methods. So you know already the methods of HTTP like get, post, put, and delete. If it is a get method, then get method is used to just retrieve some representation of resource. Okay, representation of resource. Post method is used to create some resource on server. Okay, usually you know whenever you submit a form, you use post method. So you want to create a resource. Let's take some example. For example, you want to join a Facebook. So obviously, whenever you want to join a Facebook, Facebook asks you, okay, by supplying the form that please fill up the information to create your profile. Then you as a user, okay, fill up the information in the HTML form which is given to you by the Facebook server. After submitting that form using post method, so profile will be created on the Facebook server. So profile is a resource for you. After that, you want to get how the profile is created. Then get method should be used. Okay, retrieve a representation of resource. Resource is your Facebook profile. Similarly, maybe you think that so your mobile number is changed, email address is changed, even home address is changed. You may want to change your profile photo. Then in that case, to update a resource, profile you want to update. Put method is used, modify or update a resource. So you want to update a profile by updating your mobile number, email ID, or maybe
profile photo or any other detail in your profile. So then put method is. So maybe after so many years using that Facebook account, you may want to unsubscribe from the Facebook, correct? And you do not want your account on the Facebook, you may want to delete it. Then in that case, delete HTTP method can be used, which is used to delete resource with the permission of server. So these are the 4 key methods which we use in RESTful web service, my friends. Okay. Get, post, and put and delete. So get method is to get the representation of resource, means RESTful web service. To access any RESTful web service on the client side, we use get method. To create new resource on RESTful web service, we use post method. To update that resource, we use put method. And to delete that resource, we use HTTP delete. So these are the 4 key methods. Okay, so this is all about RESTful web service, my friends, theory part. Let's do coding. तो ये अभी ये लास्ट थ्योरी पार्ट बाकी था, एक छोटा सा है वो हम आगे देखेंगे, इसके बारे में नहीं, वो दूसरा टॉपिक ऑथेंटिकेशन होता है. तो ओपन योर VS कोड. Is screen visible? No. Yes, sir. Okay. Now we'll see here Node.js. So my friends, what we will do, again here, close this folder, Express Mongo app. Okay. And close all the files, close all, see like this. And now we will create separate app folder, separate folder. So now click on this folder, new folder, and here we'll say product web service, product REST API service. We are going to develop product REST API service. So we are going to develop RESTful web service. Okay, done. Folder ready? Yes, sir. Okay, now on terminal, we need to create package.json file inside this folder. So switch to the folder cd product REST API service. Like this. And then to create package.json, which command we use? npm init. Right. Please type that command npm space init and press enter key. Okay, package name same, version same, description. So you can say here RESTful web service. RESTful web service for product resource. Product is the resource. Okay, this is a description. Test command nothing, git repository nothing, keywords nothing. Author, please type your name, I type my name. Then license, if you want to keep this ISC, you can keep press enter key. And that's it. Package.json is ready. So if you open product REST service, now you can check here, package.json is ready. Okay, देखो ये license, default license is
ISC. Then is that done? Ready? Yes, sir. Okay. So on terminal again, my friends, first of all, we will install some packages. npm I express to lagega hai. Then we will also require mongoose and also .env. So all required package you can install using single npm install command, or you can also install separately. The npm I means install express, mongoose and .env. Press enter key. Okay, done. Done. Install हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now please check once more your this dependencies section in package organization. So .env, then express, and then mongoose. All these are there. So mongoose 8.12.1 version, express 4.21.2 version, and .env 16.4.7 version. Right? Fine. So now, as usual, in a product REST API service, we first of all create .env file. So in the product, any root folder, product REST API service, create .env file. .env. Mention here 4 is equal to 4000. And as usual, a db underscore URL is equal to MongoDB protocol colon double forward slash 127.0.0.1 IP address of the localhost colon 27017 slash mydb.
Done these two lines. Yes, sir. Fine. So now let's create inside product REST API service folder, db config folder as usual, db config. And inside that db config folder, let's create a file db underscore connectivity .js. And here inside this db connectivity.js file, first of all, we need to import mongoose, okay, is equal to require single quote mongoose. After that, let's write a function connect to MongoDB. Okay. So first of all, here we need to read environment variables port and DB URL from the .env. For that purpose, we also have to import .env, this node package .env. Okay. And now inside this connect to MongoDB, you can say .env.config to read the environment variables. After that, let's establish connection asynchronously with MongoDB. So for that purpose, we'll say here mongoose.connect. And to the connect method, we pass process.env.db underscore URL. Then then. If connection is established, then inside this then console.log. And we'll just say here connected to MongoDB server. Like this. And if there is any problem, catch error console.error like this. Once done, please update me. Okay. Yes, sir. Done. Okay. Sir, 1 minute, sir. Okay. Now done, sir.
Okay, okay, fine. So now let's test first of all whether the connection to the MongoDB is established or not. For that purpose, what we'll do in the product REST API service folder, we'll create, I mean, in the root folder, app folder, we'll create, okay, express REST server .js. And here we will import express first of all. Then please import connect to MongoDB require. So ./dbconfig /dbconnector. Then let's create express server by saying here const app is equal to express, and then call the method connect to MongoDB, and then say app dot listen, and here we'll say process dot env dot port capital, and then one callback function where we will say console dot log backtick explorer like this, and then we'll say product RESTful service started and listening on port. Okay, we have a dollar. Again, say process dot env dot port capital. Write down this complete code in front of. Done. Yes, sir. Okay. Done, everybody. Yes, sir. Now let's run this file on terminal. Okay. Use a node command and express REST server .js.
कनेक्ट टू MongoDB इज नॉट ओके। तो ये जो हमने ना एक्सपोर्ट नहीं किया ये फंक्शन, देयरफॉर दिस एरर ऑकर्स। तो फ्रॉम DB कनेक्टिविटी ये जो फंक्शन है कनेक्ट टू MongoDB ये एक्सपोर्ट ही नहीं किया ना, तो प्लीज एक्सपोर्ट दिस बाय सेइंग model dot exports is equal to connect to MongoDB and now run your server again. So please write this statement in this DB connectivity JS, right? Okay, and let me run it again. Yes, on my side it is started. Let me know on your side any problem. Sir, server started. Very good. What about others? नहीं सर, मेरा एरर आ आपका वो प्रॉब्लम है ना? हाँ सर, वो किया मैंने। हाँ, हाँ मतलब डेट इस पे कंपास में भी मैंने किया तो कनेक्ट हो गया वो, बट यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है। 1 मिनट शो करता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे ये चेक करो पहले, इधर ये URL बराबर है क्या? हाँ सर। चेक करो MongoDB colon 127.0.0.1 colon 27017. हाँ सर, करेक्ट है। Then in the DB connectivity ये कोड चेक करो कि यहाँ पहले आपने .env.config ये मेथड कॉल किया है कनेक्ट टू MongoDB के अंदर, फिर यहाँ हाँ सर। process.env.db URL ऐसा आना चाहिए। मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। अच्छा, नहीं हुआ तो आपका स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, मुझे दिखा रहा है कि सर्विस स्टार्टेड एंड लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड, ऐसा आ रहा है। अच्छा वो process.env.port है ना, वो गलत तरीके से लिखा होगा, करो ना शेयर। हाँ सर। अनडिफाइन आ रहा है, वो कोड किधर लिखा है? कौन सा .env वाला? नहीं, ये सर्वर फाइल। हाँ, तो इधर सर्विस स्टार्टेड एंड लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड process.env.port करली ब्रेस है क्या ये? कहाँ पर? इधर कर लीजिए। हाँ, app.listen मेथड कॉल करो ना, कनेक्ट टू MongoDB, वो कॉल ही नहीं किया एक्सप्रेस, पांच टैप एक्सप्रेस के नीचे, पांच टैप इसके अंदर एक्सप्रेस, उसके बाद में कॉल करो ना, वो कनेक्ट टू आपने से भी इंपोर्ट किया है, कॉल करना पड़ेगा ना कनेक्शन के लिए। हाँ, अभी आया देखो बराबर 4000 आया, कनेक्टेड टू MongoDB हो गया, वो कॉल ही नहीं किया। ठीक है,
Now we are ready to develop RESTful web service. बाकी मुस्तकीम, what about you? प्रदीप, प्रदीप तो शायद बाहर है. मुस्तकीम आप कर रहे हो क्या? अजित, Yes, sir. working this connection established or Yeah, myself is ready. great. और मुस्तकीम का क्या है रिस्पॉन्स? कर रहा है, कर नहीं रहा है? Okay, now let's start building the web service. तो हम अभी कनेक्शन तो हो गया, तो प्रोडक्ट रेस्ट एपीआई सर्विस ये फोल्डर में हम कंट्रोलर्स फोल्डर बनाएंगे, हम राउटर के थ्रू क्रिएट करेंगे. तो प्रोडक्ट रेस्ट एपीआई सर्विस ये फोल्डर सिलेक्ट करो. ओके, एंड देन न्यू फोल्डर कॉल्ड कंट्रोलर्स. कंट्रोलर्स, और इसके अंदर हम बोलेंगे पी स्मॉल प्रोडक्ट अंडरस्कोर राउटर डॉट जेएस. प्रोडक्ट राउटर, प्रोडक्ट सर्विस राउटर, ऐसा बोल. प्रोडक्ट सर्विस राउटर. हाँ, ये फाइल तैयार किया कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर प्लीज इंपोर्ट एक्सप्रेस. ओके, इज इक्वल टू रिक्वायर express. Using express, please get the object of router, product router हम बोलेंगे, product r capital router is equal to express dot r capital router. Okay, then इस राउटर को भी हम पहले एक्सपोर्ट कर देते. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट राउटर. तो ये टेम्पलेट कोड रेडी रखो, फिर बाद में हम इसके अंदर कोड लिखेंगे. अभी आगे का कोड लिखना है, पहले ये 3 लाइन रेडी रखो. Yes, sir. Now, before we write any code here, you know, as we deal with MongoDB, okay, we deal with MongoDB. So from Express, whenever we deal with MongoDB, we need to create a model, okay, using schema. So now in product REST API service, please create another folder called models. Mongoose models बनाने के लिए models नाम का folder बना, models. And inside model, we will say p small product underscore model dot js file. Okay, रीनेम करता हूँ एल रहेगा. Model product underscore model. Okay, now here please import mongoose equal to require mongoose. After that, let's create a schema, product schema, once product schema is equal to mongoose dot, okay, new बोलना पड़ेगा, new mongoose dot schema. ये देखो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करो, एंड इसके अंदर हमें प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर पास करना है, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम. ओके, और इसमें हम बोलेंगे टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू, देन ब्रांड, लेकिन इसका भी टाइप होगा स्ट्रिंग, ये भी होगा रिक्वायर्ड ट्रू. देन प्राइस,
प्राइस में हम ऑप्शनल रखते हैं, रिक्वायर्ड नहीं रखते, तो इधर डायरेक्ट आप नंबर बोल सकते. So this is product schema. Done. Yes, sir. Okay. Now using schema, let's create model. Const P small P capital product equal to mongoose dot m small model, and in single quote first parameter P capital product, and mongoose will identify it, okay, as a collection name by converting it into plural, and that model we create using product schema. And please export this model by saying model dot exports is equal to P capital product. That's it. Okay. Yes, sir. Done. Done this part. Yes, sir. Now come back in product REST service router, product service router. Now here we need to import product model, once P capital product equal to require, and बोलेंगे ना double dot slash, okay, controllers नहीं, ये models folder, double dot बोलना पड़ेगा because this product service router is in controllers folder and that product model is in models folder.
models slash product model. Now we are ready to get. Now get all products. Okay, get all products. दो layer. Product router dot get, and here we'll say slash all. Okay, we pass here req comma res like this, and very simple. Here we always go for asynchronous way of dealing with this MongoDB. Okay, asynchronous. So here please use async के keyword use करना है, async. And here now we will say here await async and await. This is asynchronous way to deal with, okay, any code. And here we'll say p capital product, okay, dot find, simply find, and it will return, okay, what it will return? It will return array of products, cons products, p small products, and we will say here return, not return, response dot status 200, okay, dot json, और json में हम products भेज देते हैं, as a json response हम भेजेंगे. डायरेक्ट सेंड बोला तो भी चलेगा, फाइन, विल चेक. नीचे ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है ना. So these are web service we can develop. So what we are doing from the MongoDB, we are getting all the products, okay, and then we are serving those as a RESTful web service. 1 minute, sir. Yes. Okay, sir. Done, everybody? Okay, now we need to use this router in our main server file. The express REST server में router को import करते हैं यहाँ. So cons product router, okay, is equal to, इसको ऐसा बोलो, product service router is equal to require, okay, single quote dot slash controllers slash product service route, okay, और यहाँ हम बोलो app dot use,
और इसको पाथ देते API/products, comma product service router. That's it. So this is a path given to the product REST API. तो API/product ये main product service router का path है. Now इसके अंदर सब path भी है जो आपने देखा अभी all. So now whenever you access this, you will say API/product/all. Yes, sir. Done? Yes, sir. Fine. अभी हम इसको रीरन करते, एक्सप्रेस रेस्ट सर्वर को रीरन करते, इसको कंट्रोल सी बोलो. अभी आप नोडमॉन यूज करो, नोडमॉन, ओके, एंड एक्सप्रेस रेस्ट सर्वर. हाँ, so now product RESTful web service started and listening on port 4000. So now go to the browser and just see here localhost colon 4000 slash के बाद बोलो API slash products slash on. और देखो ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. ओके, अभी मैं इसको ना प्रेटी प्रिंट बोलता हूँ, तो देखो ये ऐसे दिखाई देगा. What about you? Any problem? Let me know. ये डायरेक्ट डेटाबेस से फेच कर रहा है और ये दे रहा है क्लाइंट को. Yes, sir. हाँ, आउटपुट आ रहा है ऐसे. Yes, sir. All other people, should I proceed? Yes, sir. Now we will also test this using Postman. Okay. So do you have Postman on your machine? अगर नहीं है तो देखो मैं इधर ब्राउजर में दिखा, डाउनलोड पोस्टमैन. ये एक सॉफ्टवेयर है, वेब सर्विस टेस्ट करने के लिए होता है. ये देखो, दिस इज अ लिंक www.postman.com. ये वेबसाइट है इसका. एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड पोस्टमैन. और जब उसके ये देखो ये डाउनलोड कर लो. डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट. लेट मी नो once you download and install it.
Okay. It is a lightweight software for testing the RESTful web service. Okay. Done this. और डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गया. Yes sir. Yes, sir. तभी इसको ओपन करो पोस्टमैन को. मेरे पास ऑलरेडी है और जस्ट टाइप हियर पोस्टमैन. साइन अप वगैरह मत करो. नीचे ना एक छोटा सा लिंक होता है लाइट वेट एपीआई. उसके ऊपर क्लिक करो. डोंट साइन अप. जब आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो अभी फिर मुझे आप अपडेट करो. ये ऑलरेडी होगा ना हमारे पास. अभी हाँ डाउनलोड सर, है करना सर. होगा. बराबर. Yes, sir. Yeah, it is there. हाँ, यानी कि जो हमने एक्सप्रेस शुरू किया था तभी हमने किया था ये. बराबर ना. Yes, sir. हाँ, पुट और डिलीट पोस्ट मेथड को टेस्ट करने के. ठीक है. तभी क्लिक ऑन न्यू. इज देयर न्यू एचटीटीपी. एंड अभी ये देखो यहाँ गेट मेथड है. गेट मेथड का सेक्शन है गेट एचटीटीपी मेथड एंड टाइप हियर http colon double forward slash localhost colon okay 4000 slash all sorry API not all API slash products slash all. और अभी सेंड बटन पे क्लिक करो. अरे देखो ये आउटपुट ऐसा दिख रहा है. ये 200 स्टेटस कोड ओके. और ये जेसन आउटपुट आ रहा है क्योंकि हम वहां से बोल रहे हैं जेसन. सेंड द रिजल्ट एज तो इट इज जेसन आ रही. Yes, sir. कर सकते. रेडी. एवरीबॉडी गॉट आउटपुट. यस सर. Yes, हम sir. नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं. उसके लिए हम ये जो राउटर है प्रोडक्ट सर्विस राउटर इसमें पोस्ट नाउ क्रिएट न्यू प्रोडक्ट रिसोर्स. तो यहाँ बोलो प्रोडक्ट राउटर डॉट पोस्ट. यानी कि क्लाइंट से डेटा आएगा और नया प्रोडक्ट यहाँ क्रिएट होना चाहिए. तो डबल कोट में बोलता हूँ स्लैश ऐड हाइपन प्रोडक्ट. ऐड हाइपन प्रोडक्ट. ओके. और यहाँ में मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन.
इससे मिडलवेयर इसको एक्सप्रेस डॉट जेसन, कॉमा, और फिर हम बोलेंगे async and we'll say req comma res, and ये arrow function होगा, right? Done. Yes, sir. Now here we will get data from the client. For that, say here const opening closing categories, name, brand, and price. And that we will get as a part of request dot body. Using post method, whenever data is sent, that is stored in request body, post, put, and delete. And now we want to add it. So we will use insert. Okay, और इसके मदद से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. Okay, model object. The const, okay, p small product equal to new p capital product, and insert that say name colon name. जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नेम है वो मोंगोडीबी का जो फील्ड है, मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट जो प्रोडक्ट है उसका फील्ड है, जो हमने मॉडल में स्कीमा में दिया है, ये वाला, ये देखो, प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा. तो नेम, ब्रांड एंड प्राइस, दीज आर वन. ओके, और ये राइट हैंड साइड वाला जो है वो ये वेरिएबल है नेम. ओके, कॉमा ब्रांड कोलन ब्रांड, कॉमा प्राइस कोलन प्राइस, लाइक. और इसको हमें सेव करना है. तो विल से अवेट, ओके, and p small product dot save, that's it, save. और फिर हम एक रिस्पांस भेजेंगे, रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और जेसन में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसमें एक प्रॉपर्टी होगा मैसेज, और यहाँ हम बोलेंगे बैकटिक यूज करके प्रोडक्ट, इसका फिर ब्रांड, फिर नेम, ओके, विथ प्राइस, प्राइस एडेड सक्सेसफुली, यानी कि न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर एडेड सक्सेसफुली. तो ये मैसेज आएगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट. जेसन ऑब्जेक्ट विल हैव प्रॉपर्टी मैसेज, और इसमें देखो प्रोडक्ट, ब्रांड, नेम विद प्राइस, प्राइस एडेड सक्सेसफुल.
Okay, done this. Yes, sir. ठीक है, तो ऑलरेडी सी वी आर यूजिंग नोड 1. अगर आप टर्मिनल पे जाते हो तो ये रिस्टार्ट हो गया, देखो नोड 1 यूज किया, इसलिए हमने नोड 1 यूज किया क्योंकि ये ऐसे ऐड करना पड़ेगा, तो बार बार रिस्टार्ट करना इतना कंफर्टेबल नहीं होगा. तो अभी देखो इधर ऐड प्रोडक्ट ये है, और अभी हमें पोस्टमैन से करना पड़ेगा. अभी तो हमारे पास वेब ब्राउजर से नहीं कर सकते, बाद में हम रिएक्ट के थ्रू करेंगे. पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते. तो नाउ कम टू पोस्टमैन. या बोलो न्यू http and method should be post. Please select the method post. Okay, and type here http colon double forward slash localhost colon 4000 slash API slash products slash add hyphen product. Don't click on send button, data भेजना पड़ेगा ना. http colon double forward slash localhost colon 4000 slash API slash product. Okay, products है ना, product नहीं, products and then slash add product. After that, click on body below this. ये body के ऊपर click करो. Right now, this drop down if you open, none is by default selected. Go to raw. Okay, और यहाँ एक नया second drop down open होता है, उसमें by default text होता है, तो आप JSON select करना. And here opening close कर ले तो इसमें type करो JSON data name. तो कोई भी name यानी कि product का name. जैसे कि मैं बोलता हूँ अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी, देन इसका ब्रांड कोलन सोनी, एंड इसका प्राइस फिर शुड बी इन डबल कोट, लेकिन प्राइस ये नंबर टाइप का होता है, तो मैं बोलता हूँ इधर कंसीडर 89999.00. तो ऐसे ऐड करो डेटा और उसके बाद सेंड बटन के ऊपर क्लिक करो, तो विल चेक वेदर द डेटा इज गेटिंग सेंट और नॉट.
Shall we click on send button? Yes, yes. Okay. एंड मैसेज क्या आता है कि एरर आता है बताओ मुझे। जैसे कि मैं सेंड करता हूँ, Added आई गॉट अ successfully. मैसेज, प्रोडक्ट सोनी यूएसडी टीवी विद प्राइस 89999 एडेड सक्सेसफुली। ऐसा मुझे मैसेज आया है, देखो। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अभी एक काम करो, मोंगोडीबी कंपास ओपन करके देखो और वहाँ ये प्रोडक्ट ऐड हुआ क्या मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी कंपास, अभी मैं भी आपके साथ माई डीबी यूज कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट किया, कनेक्ट किया। Yes, sir. Add हो गया. हाँ, ग्रेट। और ये माई डीबी, और माई डीबी में प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, हाँ, प्रोडक्ट्स में 11 प्रोडक्ट रिफ्रेश करता हूँ, 11 ही। और यहाँ चेक करना, सबसे लास्ट में, हाँ ये देखो आ गया। अभी एक काम करो, और एक प्रोडक्ट ऐड करो जो भी आपको चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ बस आपको वैल्यू चेंज करनी है, इंस्टेड ऑफ यूएसडीवी। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, HDMI केबल ऐसा मैं बोलता हूँ, एंड इट इज ऑफ टाइप इंडेक्स। प्राइस मैं बोलता हूँ 2500। ओके, और एक सेंड किया। देखो, प्रोडक्ट इंटेक्स HDMI केबल विद प्राइस 2500 एडेड सक्सेसफुल। यस, हो गया। अभी देखो यहाँ 11 डॉक्यूमेंट से रिफ्रेश किया, ये 12 हो गए, यानी कि ऐड हो रहा है। ये भी ऐड हो रहा है सबसे लास्ट में, ये देखो। So this is how we develop RESTful web service. Good. Yes, sir. Okay. Now let's go for updating the product according to the name and brand. मुझे प्राइस अपडेट करना है, तो गो टू अगेन प्रोडक्ट सर्विस राउटर। ये जो राउटर है इसके अंदर, जैसे आपने ये पोस्ट वाला लिखा, अभी हमें पुट वाला लिखा। तो इधर नाउ अपडेट प्रोडक्ट प्राइस बाय नेम एंड ब्रांड। तो we'll say product service router, product router dot put method। ओके, और यहाँ बोलो डबल कोट में स्लैश अपडेट हाइपन प्रोडक्ट कॉमा एक्सप्रेस डॉट जेसन कॉमा, और यहाँ बोलो async request कॉमा response। ओके, अभी फिर से हमें बॉडी से, रिक्वेस्ट बॉडी जो है वहां से हमें नेम कॉमा ब्रांड कॉमा प्राइस तीनों को रीड करना पड़ेगा डिस्ट्रक्चर करके। वी आर डिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट बॉडी है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग फॉर्मेट है। बॉडी ऑब्जेक्ट में ये नेम फील्ड, ब्रांड फील्ड एंड प्राइस फील्ड होने चाहिए। और अभी हमें अपडेट करना है, तो बोलो यहाँ अवेट, अवेट एंड पी कैपिटल प्रोडक्ट, ओके, डॉट अपडेट 1। ये मेथड कॉल करो। ओके, और यहाँ पहले आपको मालूम है क्वेरी ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ नेम कोलन नेम कॉमा
ब्रांड कोलन ब्रांड, और सेकंड पैरामीटर जो होता है वो सेट ऑपरेटर, और हमें सेट करना है प्राइस, प्राइस कोलन प्राइस। तो जो कोलन के पहले वो फील्ड है, मुंगड़ी भी डॉक्यूमेंट जो है उसके ये फील्ड है, नेम ब्रांड एंड प्राइस, और कोलन के बाद जो है वो डेटा है जो जा, तो ये अपडेट हो जाएगा। एंड नाउ रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 डॉट, Just a minute, sir. हाँ डॉट जेसन, और उसमें मैसेज डाल दो, यहाँ भी बैकटिक है उसको, प्रोडक्ट डॉलर ब्रांड then space dollar name is updated with price dollar subs JSON response. Done. Okay. Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना सब? अब इसको टेस्ट कर दे, कम बैक इन हियर, सो बोलो न्यू पोस्टमैन में, और यहाँ बोलो पोस्ट पुट, सॉरी पुट, यूज मेथड पुट। ओके, एक मिनट है, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, बराबर है, चलो। तो यहाँ URI है अपडेट प्रोडक्ट, इट्स वर्किंग परफेक्टली। http:// say localhost :4000/API/update-product। ओके, अगेन बॉडी के ऊपर क्लिक करो, बॉडी में फिर जाओ रॉ में फिर जाओ जेसन। ओके, और यहाँ हमें जो प्रोडक्ट अपडेट करना है उसका डिटेल देना है, नेम, देखिए मैं बोलता हूँ USDTV, जो अभी मैंने इंसर्ट किया ना उसको ही अपडेट कर, USDTV, कॉमा ब्रांड, ओके, सोनी, कॉमा प्राइस,
और अपडेटेड प्राइस अभी क्या प्राइस था 89,900 तो मैं बोलता हूँ यहाँ कुछ कम हो गया ऐसा बोलता हूँ 85,000 बोलता हूँ हाँ माय फ्रेंड डोंट क्लिक ऑन सेंड बटन ओके ये नहीं काम करेगा वन थिंग विच वी हैव टू राइट कोई बोलेगा हाँ ऑलरेडी रिटर्न है कुछ प्रॉब्लम नहीं एक्सप्रेस डॉट जेसन यही मुझे बोलना था तो इट विल वर्क नो प्रॉब्लम करो सेंड सेंड बटन पे क्लिक कर यस ये देखो प्रोडक्ट सोनी यूएसडी इज अपडेटेड विद प्राइस 85,000 कोड इज परफेक्ट नो प्रॉब्लम ओके देखो अपडेट हो रहा है यस सर ग्रेट और इसमें कंपास में जाके देखो अभी करंट प्राइस हाँ ये 89 है तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इधर रिफ्रेश बटन स्क्रॉल ऑब्वियसली ये देखो 85,000 so this is how update product works done वर्क हो रहा है सक्सेसफुली यस सर अभी लास्ट करते डिलीट लास्ट ऑपरेशन डिलीट प्रोडक्ट बाय नेम एंड ब्रांड नेम एंड ब्रांड एक काम करते नेम ब्रांड एंड प्राइस कुछ सिंपल है प्रोडक्ट राउटर डॉट डिलीट ये मेथड यूज करते अरे हम बोलेंगे स्लैश डिलीट प्रोडक्ट कॉमा अगेन यहाँ एक्सप्रेस डॉट जेएसएन बिल्ट इन मिडलवेयर यूज कर कॉमा async ये कीवर्ड यूज करो then again req comma res arrow and now again fetch the data from request pass name comma brand comma price and req dot body okay तो फिर बोलो await p capital product dot delete one dot delete one और बस यहाँ बोल दो नेम कोलन नेम कॉमा ब्रांड कोलन ब्रांड कॉमा प्राइस कोलन प्राइस दैट्स इट मैन और यहाँ बोलो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट ओके जेसन इसमें फिर मैसेज डाल दो टैक्टिक यूज करो अगेन यहाँ प्रोडक्ट डॉलर ओपनिंग क्लोजिंग कॉलेज ब्रांड स्पेस नेम ओके एंड प्राइस having price is deleted successfully. That's it. Just a minute, sir. Yes. Yes.
Done. Yes, sir. हो गया ना सबका? Yes, sir. अभी जाओ पोस्टमैन में, अगेन बोलो न्यू HTTP. Now your method is delete and type here URL http://localhost:/products/delete-product. ओके, ये टाइप करने के बाद बॉडी में जाओ, या फिर वो जेसन रॉ, रॉ में जेसन, और आपको जो भी प्रोडक्ट डिलीट करना है उसके डिटेल यहाँ डाल. नेम, नेम, ओके, कंसिडर वो मुझे HDMI केबल वाला प्रोडक्ट डिलीट कर. फिर ब्रांड, उसका ब्रांड है इंटेक्स, और प्राइस, प्राइस भी दे दे. ओके, तो मैंने शायद 2500 दे. पहले आप कंपास में देख लो जो प्रोडक्ट डिलीट करना है उसका एग्जैक्ट डिटेल्स. हाँ, ये देखो HDMI केबल इंटेक्स 2500 बराबर, और सेंड बटन के ऊपर क्लिक करो. यस, प्रोडक्ट इंटेक्स HDMI केबल इज डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसा बोल रहा है. लेकिन ये डिलीट हुआ क्या? नहीं डिलीट हुआ क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया. इंटेक्स का स्पेलिंग गलत है. इंटेक्स, ये ऐसा स्पेलिंग है. पोस्टमैन में जाता हूँ, अरे सेंट, अभी देखता हूँ मैं रिफ्रेश करके, ये 12 है ना. हाँ, अभी डिलीट हुआ देखो. तो डेटा शुड बी करेक्ट, अदरवाइज आपको ये रॉन्ग मैसेज देगा. ओके, देखो डिलीट हो रहा है आपके साइड पे. Yes, sir. Fine, friends. So here we have completed a REST API, how to develop using Express along with MongoDB. MongoDB तो database है, but using Express how to develop RESTful web service. Again, Monday हम और एक topic देखेंगे, authorization and authentication. Once we complete that, then we will go for how to integrate this RESTful web service with front end. Front end हुआ है क्या सबका? React और Angular. Yes. ठीक है, तो वो देखेंगे. तो टुडे विल स्टॉप हियर. तो ये आपको समझ में आएगा वो, अगर आपका फ्रंट एंड हुआ है. लेट मी टेक अटेंडेंस. Sixth March. श्रेयस, अंकुश, Present, sir. अजित, Yes, sir. मुस्तकिम, विवेक, प्रदीप,